श्रीमन्नारायणीयं दशकं 17 उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगदिः शरणं गताभूत्। अंगे पितुः सुरुचिपुत्रम् उत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोदिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्ध्यजा खलु भवद् विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्म गति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चिदात्मा माणिनिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते। ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमना क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान्। तावत् तपोबलनिरुच्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रस निलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः। त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिधरेण तथा धरेण तावद्विपोदविमलं प्रणुवन्तमेनम् आपाशदास्त्वमवगम्य तदीयभावम्। राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम्। इत्यूचुषी त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेत रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमा धृतराज्यभारः। यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद् धनधातुभेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढां वृणोन्महात्मा। अन्धे भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपते मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुद्धि मम मयौघान्। श्रीहरये नमः। श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं। श्री चोट्टानिक्करै भगवति अम्मये शरणं। आनंद चिन्मयने शरणं। नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।